Assalamu alaikum everyone. How are you all? Good. And how Alhamdulillah, about I'm you? good too. Thank you for asking, Naya. Okay, let me know. Your Screen is visible. Okay, so let's wait so everybody can join. Then we'll start our session. Okay. Yes, ma'am, it's visible now. Ma'am, I have a question. Yes, Yamina. Ma'am, what is the difference between may and might? Okay, we will study Might later. is also an auxiliary verb. We will discuss because our next topic is Okay, ma'am. about certainty. We will discuss may, might, maybe. What's the difference between all of them? Okay, don't worry about it. Okay, ma'am. Okay, students, so without any further delay, let's get started. So today's topic is must versus must. Why must versus must? Because we have already studied must under the heading of the obligations. Okay, but today we discuss another use of the must, which it's totally related to the logical conclusion. How can we use must to talk about something that is logically possible or that is logically impossible? Got it, everybody? Yes, ma'am. Okay, just to refresh or just to remind, student, can anybody tell me what's the usage of must? I'm asking about the obligation point of view. Where we use must? Ma'am, must is used for inner Yes, feeling Amina. or for stronger advice. Okay, very good. We use must for this. Inner feeling. Okay, yeah, because when you feel something is strongly, when you feel something strongly about something, so it's become an obligation for you. Very good. And anyone else In an want to order way, add something? we use in order way. No, not in an order way. Here we use in a formal obligation. And something we use in obligation that is formal or in the written English. For example, all employees must wash hands. All workers must wear masks. So this is the formal, you can say, or in the written English for the obligations. Okay, if I make it negative, mustn't, then it will be used for the things which is prohibited. very good. The thing which is prohibited, unethical, unlawful, that is forbidden, we use mustn't. For example, children mustn't be left at an unattended. Okay, like that. Very good. So far we have discussed that we use must for the obligation that you feel strongly about, like I must remember to send him a birthday card, or for the obligation which are in written English or in a formal, more formal. For example, all employees must wash hands for the stronger advices. For example, when you want to give some advice and you want to emphasize more on it, for example, you must try this dish, it's really amazing, or you must read that book, it's really interesting. And if it is negative, we use mustn't to say that something is prohibited or something is forbidden. For example, children must not be left unattended. I think it's clear now. It's just a revision. It's just a revision about must under the heading of obligation. Yes, So ma'am. far, so good, students? Okay, let's discuss must versus must. As you can see, the first sentence, student, like Ali always fails in exams. He must work hard. Can anybody translate it for me? अली हमेशा एग्जाम में फेल हो जाता है, उसे
मेहनत करनी चाहिए. उससे मेहनत करनी चाहिए. Okay, very good. Okay, if I say in a way, Ali always gets position in exam. He must work hard. वो मेहनत What does it करता mean? होगा इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन लेता है ना. Exactly, because this is always gets position in exam. उसकी हमेशा position आती है exams में. He must work hard. यानी this is logically possible. वो मेहनत कर स्टेटमेंट को अगर इस तरीके से बोलूं, अली ऑलवेज फेल्स इन एग्जाम, वो हमेशा फेल हो जाता है. ही मस्ट वर्क हार्ड. इट्स मीन दैट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन समथिंग. ओके, ही मस्ट वर्क हार्ड. ये मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई अली के लिए. अली को जरूर मेहनत करनी चाहिए. So it's mean that you can use in a way to talk about the obligation to strong advices, and you can also use must to talk about the logical conclusion of something. Okay, let's do another example. Students are not satisfied with Sir Hasib. He must. Yes, come on. मैम Yes, स्टूडेंट ma'am. Sir Hasib, Exactly. This it is means Sir Hasib don't know how to teach. okay. Very good. You're advising him. Okay, let's come to the next statement. Sir Hasib has been teaching for 16 years. He must know how to teach. मैम वो 16 ईयर से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से जानते हैं कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है. Possible mean वो 16 साल से पढ़ा रहे हैं. 16 years से वो टीचिंग की फील्ड से एफिलिएटेड हैं. इट्स मीन ही मस्ट नो हाउ टू टीच. उन्हें पता है कैसे पढ़ाना है. स्टूडेंट, डिड यू नोटिस द डिफरेंस कि जब हम लॉजिकल कंक्लूजन की Yes, बात कर ma'am. रहे हो, कब हम ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं? एवरीबॉडी, फरवा, मेमुना, मेहरुन्निसा, अक्सा, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Okay, let's come to the next example. If he wants to start new business, he must have a lot of money. Okay, yes, Saman, are you there, Saman? Saman, Ma'am, are may you I? there? Oh, yes, Naz. अगर तुम बिजनेस स्टार्ट शुरू बहुत सारी पैसे होने चाहिए. Very good, excellent. अगर तुम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए लाजमन तुम्हारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो लाजमन तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए. ओके, नाज, ट्राई दिस वन टू. He always comes by different cars. He must have a lot of money. वो हमेशा मुख्तलिफ कार से आता है और उसके पास लाजमी बहुत सारी मनी है. उसके बाद लाजमन बहुत सारे पैसे हैं. तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उसमें एक में हम एडवाइस कर रहे हैं कि भाई अगर लोग एडवाइस कर रहे हैं और दूसरे में हम बता रहे हैं कि उसके पास है तभी वो मुख्तलिफ कार्स पे आता है. या हम लॉजिकली कंक्लूजन दे रहे हैं कि उसके पास. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Okay, so this is what I'm talking about. Must versus must means one must we are using for the strong obligation and another one we are using for the logical conclusion. Okay, and as I told you before, how can we make it a past? Agar mujhe must ka past banana hai, I'm simply asking if I want to make a past of must, how can I make it? Yes, any one of you? Ma'am, have and plus participle Are you sure you're form. No, ma'am, that's I based told on you a verb. before. मैम हम No, लोग just जब past बनाना है. मैम जब हमने Must. मैम जब हम पास बनाते हैं उसके साथ हम लोग हैव लगाते हैं क्योंकि हमें पता है मॉडल इसलिए वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है. फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म. Past is not possible with mustn't. Yeah, exactly. अगर तो हमें इसको पास्ट बनाना है, we use should have. Okay. Yeah. Should have plus participle. Okay, ma'am. Yeah. Should have follows by. Just not possible. Okay.
So if you want to make a simple sentence with modal like must plus base form of the verb for the strong obligation, and if you want to make it negative, mustn't, that something is prohibited, also follows verb. But if you want to make the past of the must for the past obligation, then it should be should have. Should have follows by the past participle. Got it, everybody? लास्ट फॉर्मेशन थी जो हम पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करके आए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लॉजिक की पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हमने ये तो हम मस्ट यूज कर सकते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मेशन, सब्जेक्ट फॉलोज बाय द मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब and follows by the extra words. So this is what you can use to make a logical conclusion using present. As we have seen some example before, like Ali always gets position in exam, he must work hard. He, subject, must work hard. What is it? Base form of the verb. He must know how to teach. Must know what is base form of the verb. He must know how to teach. Got it, everybody? Yes. Okay जी। अब जब हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं, हम सिंपली मस्ट यूज कर लेते हैं। ओके, लाइक something, student must not enter the principal room or the principal office. ओके, सो लाइक दैट। बट अगर हमें किसी चीज का लॉजिकली बात कर रहे होते तो हम मस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव बनाना हो, व्हेन समथिंग दैट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल, तो हम मस्ट नॉट यूज नहीं करते, वी यूज कांट। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हमें कोई बात करनी है व्हिच इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल, मींस इलॉजिकली इम्पॉसिबल, तो हम क्या यूज करते हैं? खान प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम मस्ट नॉट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मस्ट नॉट हमने यूज किया तो वो अगेन हमें कौन सी सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन वाली फीलिंग देगा, लाइक नेगेटिव ऑफ इट, इट्स समथिंग प्रोहिबिटेड, कोई चीज मना है, कोई चीज अनलॉफुल है, ठीक है? तो अगर मस्ट नॉट यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल विजिटर्स मस्ट नॉट टच द पेंटिंग, तो व्हाट डज इट मीन कि विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू टच द पेंटिंग्स। इसमें कोई लॉजिकल थिंग नहीं है, इसमें क्या है, एक यू कैन से ऑब्लिगेशन है जो कि फॉर्मल या रिटर्न हो सकती है। ओके, लेकिन अगर हमें कोई एक बात करनी है जो कि लॉजिकली इम्पॉसिबल हो, देन वी यूज कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉट इट? क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. We will discuss each and every formation, we will discuss one by one, don't worry about it, I'm just giving you a introduction. Okay, then again we can make it progressive, हम उसको progressive भी बना सकते हैं। How? Must follows by the be, because as I have told you in the beginning, must is a modal and it always takes the base form of the verb. So be here first and then follows by the verb ing form for the present. Got it? Must be plus verb and ing. Okay, if you want to make it negative, again we cannot use must, we have to use can't be plus verb and ing. अगर आपको must का future बनाना है, आपको must का future, it definitely will be will, अब उसके लिए हमें will ही use करना पड़ेगा। Why? I'll tell you later. Okay, यहाँ will क्यों आया है? Will again a model. Okay, will plus base form of the verb to talk about the future. इसी तरीके से अगर हमें लॉजिकल, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात कर रहे थे तब तो हम कह रहे थे नहीं, मस्ट का पास्ट नहीं हो सकता, वो हम शुड हैव से बना रहे थे। ओके, लेकिन अगर हम लॉजिक की बात करें तो हम मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं। ओके, सिमिलरली वी कैन आल्सो मेक इट अ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, we can also make it a perfect progressive like must have been and then plus verb and ing. To make it negative, again can't have been plus verb and ing. Yes, I ma'am. hope the formulation is clear Yes, now. ma'am. Ma'am, Okay. just Shall I to- move? Ma'am, Ma'am, ing लोग- form में कोई एग्जांपल दे दें। अभी हम सारे ma'am, एग्जांपल whenever we Must talk be. about Okay, let's discuss the first one. Must plus base form of the verb. The screen is visible.
Ma'am, No, may ma'am, I not here. ask something? Yes, ma'am, Okay, it's now visible. check. Ma'am, whenever we talk about the Okay, it's- past, we use should have, right? We don't use must have. But logically, you are saying that it is right to use must have. Then we use must have in speaking while speaking. हम must have नहीं use कर सकते, तब हम should have ही use करेंगे, ठीक है, under the heading of obligations, ठीक है. लेकिन अगर must का यूज में एज अ लॉजिकल कंक्लूजन के लिए यूज करें तब उसका पास्ट बनेगा. मैं आपको भी एग्जांपल्स दूंगी. आई विल गिव यू एन एग्जांपल सो इट विल बी मोर क्लियर. ओके, okay, let's discuss must plus base form of the verb logic present. So we use must plus base form of the verb to talk about the logical conclusion. In other words, when we are 95% sure about something in the present, जब हम किसी चीज के बारे में श्योर होते हैं कि या वी आर 95% श्योर ये इतना ही होगा. फॉर एग्जांपल, look at that bag, it must be expensive. Okay, so how can I come with this answer? This is my logical conclusion. By appearance, I can guess this. I'm 95% sure this bag must be expensive. Yes, ma'am. Got it, everybody? For example, let's take an example one by one. Now I'll ask you to explain it. Okay, the first is Ali speaks fluent English. He must take language classes. Yes, Amreen. Yes, Amreen, ma'am. are you there? Okay, Amreen, can you explain? Ali speaks fluent English. He must take language classes. He must. मैम इसमें हमने क्या करना है? अच्छा, आपको मैम सेंटेंस से क्या समझ आया? आप उर्दू में translate उर्दू में तो ये है कि अली स्पीक्स ही मस्ट टेक लैंग्वेज क्लासेस. उसको लैंग्वेज क्लासेस लेनी चाहिए. नो डियर, ये नहीं है. देखें, यहाँ हम लॉजिकल कंक्लूजन की बात करें. अगर तो आप अली को सजेस्ट कर रही होती ना कि अली अली इज नॉट गुड एट इंग्लिश, अली की इंग्लिश अच्छी नहीं है, ही मस्ट टेक इंग्लिश क्लासेस और लैंग्वेज क्लासेस, तब तो Yes, सही था ma'am. कि आप उसको स्ट्रांगली एडवाइस करें कि अली यू शुड गो एंड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. अली बहुत रवानी से बोलता है, ये ठीक है, बट इसमें लॉजिकल कंक्लूजन है. आप खुद से सोचें, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है अली. यस मैम. मैम फिर Okay. ये होगा, फिर सेकंड सेंटेंस चेंज करेंगे इसका. हाँ, सेंटेंस तो इट्स अप टू यू, आप कुछ भी बनाएं. यहाँ हम डिस्कस करें कि हम लॉजिक को कैसे यूज करें सेंटेंसेस में. ओके, मस्ट का हम लॉजिकल कंक्लूजन वाला एग्जांपल देख रहे हैं. ओके, बी अटेंटिव इन माय क्लास. आई कैन रैंडमली कॉल एनीबॉडी टू ट्रांसलेट. ओके, ओके, यस Asma. Asma, the second example. Sir Hasib teaches online and his internet connection never gets disconnected. He must have a good internet connection. मैम हेलो. Sorry, ma'am. Okay, you have some connectivity problem. I'll ask you later. Yes, Saman. यस मैम. सर हसीब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं और उनका इंटरनेट कभी खराब नहीं हुआ. वो जरूर अच्छा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. Yeah, because you are 95% sure, not specifically 95%, but you're pretty much sure that he must have a good internet connection. तभी तो disconnect नहीं हुआ ना? Is it logically Yes, ma'am. possible? यस मैम. Very good there. Sarah is sad and she's crying. She must have some problem. Yes, any one of you? सारा उदास है Come और on, वो रो भी students. रही है जरूर के साथ जरूर कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. होगी. May I? Last, yeah, last. Okay, last one उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है. So this is logically possible. वैसे सारा उदास नहीं होती. Sarah is a very lucky, go happy person. If
If Sarah is sad and she's crying, जरूर कोई बात है. She must have some problem. I'm sure she must have some problem. उसके साथ कोई जरूर मस्त है. Maybe add some object. Sameer has an expensive car. He must have a good salary. समीर के पास महंगी गाड़ी है, उसके पास उसकी सैलरी अच्छी होगी, लाजमन उसकी सैलरी अच्छी होगी. Last one, उसकी salary अच्छी होगी. Yeah, it's logically possible. Very good student. Okay, where is Sir Haseeb? Sir Haseeb कहाँ है? He is in the office 100%. Okay, so he is in the office. इसमें हमने क्या use करा है? Simple present use करा है. He is in the office. We are talking about his existence or his state. Okay, he is in Sir Haseeb, but you are not that 100% sure, but you are pretty much sure that he. Then you use he must be in the office. वो यकीन है in the class. Student, did you notice a difference between both the sentences? When it is he is in the office and he must be in the class. जब हमने simple present use किया he is in the office, we are 100% sure, कोई doubt ही नहीं है. जब हम 100 reality की बात करते हैं, हम facts की बात करते हैं, हम tenses use करते हैं. लेकिन if you are pretty much sure but you are not 100% sure, ये लाजमन class में होगा. Got it? Yes, ma'am. Everybody? Excuse me, ma'am. Yes. Yes, Umar. I'm sorry to interrupting. And not working. I'm using Your voice is not clear. again. I could not understand. Zumar, I didn't catch you because your voice is breaking. Ma'am, hello. Yes, you are audible now. Yes, Zumar. Ma'am, here is internet problem. Can I take recording this from you or Sir Haseeb? From Okay, ma'am. Always make delicious dishes. वो हमेशा लजीज खाने बनाती है. Her husband must be happy. Can anybody translate? Yes, Parva. सारा हमेशा बहुत मजेदार खाने बनाती है, इसलिए उसका हस्बैंड जरूर बहुत खुश होगा. Yeah. लाजमन बहुत खुश होगा या जरूर बहुत खुश होगा. Means you are sure about it. This is logically possible. Okay, student. Now come to the next heading, which is can't plus base form of the verb. If something that is logically impossible or something that is logically not possible, instead of using must not, we use can't plus base form of the verb. Got it? Okay, let's do this example. Be attentive, all of you. She must be at home. Okay, when something is logically possible, because this is Sunday, this is a holiday, or this is a holiday, okay, vacation day, or you can say this is Sunday, he must be at home. वो last month अपने घर पर होगी. It is 9 p.m. She must be busy cooking right now. Okay, must be busy cooking right now. So what is it? Can anybody translate it for me? She must be busy May I, cooking ma'am? right now. Yes, go. ये रात के 9 बजे हैं, वो जरूर खाना पकाने में मसरूफ होगी. Yeah, exactly. अभी 9 बज रहे हैं, वो लाजमन खाना पकाने में मसरूफ होगी. Means you are pretty much sure about it कि वो अभी खाना पका रही होगी. आपने किसका टेंस बनाया? आपने प्रोग्रेसिव का टेंस बनाया. You are expecting from सारा कि अभी 9 बज रहे हैं, तो सारा तो किचन में होगी, कुकिंग कर रही होगी. Then you can use she must be busy cooking right now. Okay, it's clear, everybody? Yes, ma'am. Okay. For example, if it change a statement like today is her engagement, she must be in parlor or salon, you can say. आज Okay. उसकी If it engagement is है, Monday, तो वो लाजमन कहाँ होगी? पार्लर में होगी. ऑफिस में. Parlor में. Yes, ma'am. No. It Okay.
It is Monday, so Monday is a weekday, okay, and she must be in office. So logically क्या possible है, वो कहाँ होगी? Office में. She must be in office. Okay. Okay, let's do next example. How does Ali come to office? Ali office कैसे आता है? अब सब अपने अपने assumptions दे रहे हैं ना. He has a bike. उसके पास bike है. He must come on bike. Yes, any one of you translate sentence. उसके पास बाइक है, वो लाजमन बाइक पे आता होगा. उसके पास बाइक है, वो लाजमन बाइक पे आता होगा. लॉजिकली पॉसिबल. बाइक है तो बाइक पर ही आएगा. Okay, next sentence. His office is on walking distance. He must come on foot. उसका ऑफिस नजदीक है, वो लाजमन पैदल आता होगा. उसका ऑफिस जो है वो पैदल के रास्ते पर है, उसको वॉकिंग पैदल आना डिस्टेंस पर चाहिए. है. वो लाजमन पैदल आता होगा. नहीं, आना नहीं चाहिए, वो आता होगा, क्योंकि आपने पहले लॉजिक दी है ना. His office is on working distance. अगर for example Ali is getting okay, for example Aliya, the person is Ali. Ali is getting weight day by day, or he has become obese, then he must come on foot. अली का वजन बढ़ता जा रहा है, वो मोटा हो रहा है, उसे पैदल आना चाहिए. Now this is your strong obligation. Okay, लेकिन यहाँ आपने क्या लॉजिक दे दी? His office is on the walking distance, so it's better to come on foot, or logically possible he must come on foot. Clear? Yes, ma'am. Clear, students? Okay, he doesn't have a bike. He doesn't have a bike. He must use public transport. उसके पास बाइक नहीं है, वो Yes, जरूर come on, students. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता होगा. वो लाजमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता होगा क्योंकि उसके पास बाइक नहीं है. दिस इज लॉजिकली पॉसिबल. वेरी गुड. ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज सारा डूइंग राइट नाउ? Okay, so right now can show the progressive. Okay, so this is a hint. I can hear music from her room. She must be watching a movie. Yes, come on, students. मुझे मैं उसके रूम से उसके रूम से म्यूजिक की आवाज आ रही है. वो जरूर कोई मूवी देख रही होगी. जरूर मूवी देख, बिकॉज दिस इज लॉजिकली पॉसिबल. उसके रूम से आवाज आ रही है, यू आर प्रीटी मच श्योर अबाउट इट. ही मस्ट बी वॉचिंग अ मूवी. वो जरूर कोई मूवी देख रही. Okay, it's 11 a.m. a.m. means 11 in the morning. She must be watering plants. सुबह के 11 बज रहे Yes, हैं, I'm वो reading. पानी दे रही होगी पौधों को. जरूर. हाँ, वो लाजमन पौधों को पानी दे रही हो. अभी 11 बजे का टाइम है, लाजमन पौधों को पानी. Means you are sure about it. Okay, so student, let's do another example. Sir Hasib is not taking right now. I think it's class. Sir Hasib is not taking class right now. Okay, then he must be busy with his kids. Yes, ma'am. वो लाजमन अपने बच्चों के साथ बिजी होंगे. Very good. It is 2 a.m. He must be sleeping. सुबह के 2 बज रहे हैं. Okay, रात के वो लेट नाइट हो गया. Yes, late ma'am. night है ये. He must be sleeping. वो लाजमी सो रहे होंगे. Okay. It is 8 p.m. अब ये सुबह की रात की बात होगी. It's 8 p.m. He must be taking Yes, dinner. ma'am. वो जरूर खाना खा रहे होंगे. वो जरूर खाना खा रहे होंगे. Okay, very good, student. Okay, let's take another example. Ali always gets accident. Ali का हमेशा ही एक्सीडेंट हो जाता है. He must be in a hurry. वो लाजमन जल्दी में हो. He must be in a hurry. वो लाजमन जल्दी में होगा. He can't abide by traffic rules. वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता. हाँ, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता. वो लाजमन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता होगा. लेकिन अब हमने यहाँ मस्ट यूज नहीं किया है. हमने क्या यूज किया स्टूडेंट? कांट. ओके,
cannot, and which is followed by the base form of the word abide. He cannot abide by traffic rule, or he can't abide by traffic rules. Okay, for example, he can't focus on वो driving. ड्राइविंग पे फोकस ना करता होगा ड्राइविंग में फोकस नहीं करता होगा, तभी तो उसके या इतने नहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. He must use cell phone while वो जरूर driving. ड्राइविंग के दौरान फोन यूज करता होगा। वो लाजमन ड्राइविंग के दौरान फोन यूज करता हुआ, तभी तो उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं. Okay, he can't be good at driving. कि ड्राइविंग लाजमन अच्छी नहीं होगी। वो कभी ड्राइविंग वो में good ड्राइविंग में नहीं अच्छा ड्राइविंग नहीं होगा. करता होगा। वो अच्छा ड्राइवर नहीं होगा. He can't be good. वो अच्छी ड्राइविंग नहीं करता होगा. Good, very good students. Now, did you notice the difference? Must and cannot. Yes, ma'am. Okay, okay, let's take another example. Sarah always comes late. Sarah हमेशा देर आती है. She must have to do some. She must have to उसे do home जरूर chores. लाजमन घर के काम करने होंगे। Yeah, लग गया लाइट लगा दो ना, लगा उसे लाजमी घर के काम करने पड़ते होंगे. Okay, okay. She must get stuck in traffic. वो पक्का ट्रैफिक में फंस गई, या वो लास्ट मंथ ट्रैफिक में फंस गई होगी. He must get stuck in Yes, traffic. ma'am, Very good. वो लाजमी Okay. ट्रैफिक में फंस। She must wake up late. You are वो pretty much जरूर sure that she must. देर से उठता होगा। वो जरूर लेट होती वो होगी। जरूर देर से, वो लाजमन लेट उठी होगी. आपको पता होगा. Means you have something in your mind that you are saying that she must wake up late. वो लाजमन लेट उठी होगी. It's clear, student? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, it's mean ma'am. when something is logically impossible, then we have to use can't plus base form. And when something is Exactly, logically possible, exactly. then we have to use must plus base form. Exactly. Okay, now let's talk about will. अब will use करेंगे. Again, will is a model student, and we use will plus base form of the word to talk about the future. Okay, when we are 99% sure about something will happen, हमें पता होता है कि ये होने वाला है. We are 99% sure. Okay, अगर 100% sure होंगे तो definitely हम present simple use कर लेंगे. But we are 99% sure about something will happen, so we use will. Okay, for example, tomorrow is her exam. She will definitely come. What does it mean? कल उसका एग्जाम है, वो जरूर आएगी। क्या अगर मैं definitely को replace कर दूं surely से, for example, tomorrow is her exam. She will change meaning. Means you are 99% sure about it. Okay. Next example, student. He will definitely वो call you जरूर तुम्हें because he कॉल needs करेगा money. बिकॉज वो उसे आपको पैसों की जरूरत जरूर फोन करेगा पैसों की because जरूरत. उसे This is पैसों की something जरूरत है। like आप ये तो possible है ना. ये तो ऐसा होना ही था. Ultimate result यही है. Ultimate goal ही यही है. Okay, Sarah will definitely come tomorrow in my birthday. सारा सारा जरूर सुबह कल आएगी मेरे बर्थडे पे। You are sure because maybe Sarah is your best friend, or Sarah promised you to come. That's why you're sure that Sarah will definitely come tomorrow in my birthday. Okay, she will definitely not come because she is ill. देखिए आगे again हमने एक logic दे दी. She is ill. That's why we are saying she वो will वो जरूर कल नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है। exactly. They will definitely not call you because they have come to know. वो लाजमी वो आपको यकीनन कॉल आपको कॉल नहीं करेगी। नहीं करेंगे because वो आपकी हकीकत को जानते हैं. अब वो यकीनन आपको कॉल नहीं करेंगे. Okay. Okay, student. Now discuss must have plus past participle, or must have been plus verb and ing. Even you can use this to talk about the past logic, when something that is logically possible in the past, okay, that are logically true in the past, then we use this. Okay, जब हमने must यूज किया था लॉजिक में, तो तब हम किसकी बात कर रहे थे? हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे. उसी को अगर हमने नेगेटिव किया था लॉजिक में, तो हमने उसको can't प्लस उसको will प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दिया. लेकिन अब हम दोबारा कुछ ऐसी चीजों के बारे पास्ट में बात करें. कुछ चीजें पास्ट में बिल्कुल पॉसिबल थी, लॉजिक use must have plus past participle. Again, you have to remember we are not talking
about obligations. यहाँ हम obligations की बात नहीं कर रहे, ठीक है? यहाँ हम logical conclusion की बात कर रहे. Got it, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरीके से अगर हम जैसे कि हमने वहाँ must का negative can't have से बनाया था, अगर हम कोई चीजें जो पास में लॉजिकली पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, लॉजिकली इम्पॉसिबल थी पास में, तो वो हम कांट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इट विल बी Ali must have stolen it because he was there when I left. Yes, come on. मैंने अपना सेल फोन खो दिया है. Because वो वहाँ पे था. क्योंकि जब मैं गया वो वहां था. ओके, देखें अब ये पूरा स्टेटमेंट इसमें आई हैव लॉस्ट माय सेल फोन, यानी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने अपना फोन खो दिया है. ओके, अली मस्ट हैव. अब हम इधर जो अगर यहाँ प्रेजेंट का स्टेटमेंट होता है ना, तो हम डेफिनेटली अली मस्ट स्टील, अली मस्ट स्टील इट करते हैं. लेकिन अब हम यहाँ किसकी बात करें? पास्ट की बात करें. दैट्स व्हाई अली मस्ट हैव स्टोलन इट because he was, not he is, we are talking about past because he was there, उस वक्त वहां था when I. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Past की बात है. Okay, so Yes, it is past. So she must have driven carelessly. Yes, come उसने on. पक्का लापरवाही से गाड़ी चलाई होगी. Yeah, because this is logically possible in the past, not in the present. It is logically possible in the past. She must have driven carelessly. उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई होगी. She must have been in a hurry. वो जरूर जल्दी में रहा होगा. वो जरूर जल्दी में होगी, वो लाजमन जल्दी में होगी. She must have been in a hurry. Okay, और she must have had an appointment. उसकी कोई अपॉइंटमेंट होगी. हाँ, अब लॉजिकली ये भी पॉसिबल है, जब उसने इतनी रश ड्राइविंग करी, उसने केयरलेसली गाड़ी चलाई, तो मे बी इट्स पॉसिबल. यू आर प्रीटी मच श्योर अबाउट इट 95%. इन द पास्ट शी मस्ट हैव हैड एन अपॉइंटमेंट. शायद उसकी कोई अपॉइंटमेंट होगी लाजमन. ओके, लाजमन, नॉट शायद, बिकॉज यू आर यूजिंग मस्ट. लाजमन उसकी कोई अपॉइंटमेंट होगी. ओके, इट कांट हैव बीन हर मिस्टेक. अब मैं वो उसको जरूर नेगेटिव उसकी बना रही हूँ. मिस्टेक नहीं रही होगी. उसकी गलती नहीं रही होगी. उसकी गलती नहीं होगी. जो एक्सीडेंट हुआ उसका कोई और रीजन होगा, बट मैं सारा को बहुत अच्छे से जानती. इट कांट हैव बीन हर मिस्टेक. ये उसकी गलती तो नहीं है. दिस इज लॉजिकली इम्पॉसिबल फॉर मी. गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's take another example. Ali has failed in exam. अब ये भी पास की अली बात होगी ना. एग्जाम Ali has में failed in फेल exam. हो गया. हो गया, अली हो चुका है fail. Now the result is Ali is failed now. Okay, he must have ignored his studies. उसने अपनी उसने स्टडीज जरूर को अपनी पढ़ाई नजरअंदाज किया होगा. Yeah, very good. He can't have taken classes properly. He can't have taken classes properly. Okay, ma'am. Yes, come on, student. उसने त्वचा की क्लासेस नहीं ली होंगी. Because this is logically not possible. He can't have taken classes properly. Okay, next example. Ali is a good student, but he has failed in exam. अली एक अच्छा Ali स्टूडेंट. must have, अली एक अच्छा but फिर भी Ali fail स्टूडेंट हो गया. है पर वो फेल हो गया है. फेल हो गया. Ali must have had some personal problem. जरूर अली को कोई लाजमन अली के साथ कोई घरेलू मसला हुआ होगा. जाती Okay, मसले personal हुए problem. रहे होंगे. Okay. He must have been ill. वो शायद तभी वो लाजमन बीमार हुआ होगा. Okay.
he can't have reached examination hall. वो एग्जामिनेशन हॉल पहुंच नहीं पाया. वो एग्जामिनेशन हॉल ही नहीं पहुंचा होगा. Okay, so this all are logically possible or impossible in the past. That's why we are using must have past participle and can't have past participle. Okay, the next example, students, Haseeb had a class but he didn't take. Sir की class थी सर पर हसीब की एक क्लास थी पर उन्होंने नहीं ली. Exactly. Okay, so the first one, he can't have got up. वो शायद उठ नहीं सके होंगे. उठ नहीं सके होंगे. Okay, he must have been in trouble. वो मुश्किल में हुए होंगे. वो जरूर किसी मुश्किल में Yes, होंगे. very good. He must have had connectivity issue. उन्हें जरूर कनेक्टिविटी का इश्यू रहा होगा. Connectivity problem होगा, issue होगा. Very good. Okay, Sir Haseeb has many students and all students are satisfied with him. सर हसीब के पास बहुत सारे शागिर्द हैं और सब उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड यानी कि खुश हैं. तो अब इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है? वो लंबे अरसे से जो है ना पढ़ा रहे हैं. He must have been teaching for a long time. He must have been teaching for a long time. वो काफी लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं. Very good student. Okay, Ali is very tired. He must have been working since morning. अली बहुत वो सुबह से काम कर रहा सुबह से काम होगा. कर रहा है. वो जरूर सुबह से काम कर रहा है. अली लाजमन सुबह से काम कर रहा है. He must have been, हमने progressive भी बना दिया perfect के साथ. He must have been working since morning. Got it? Yes, ma'am. Okay. So inshallah from tomorrow class we will start may, might and could. Okay, so far student, any confusion you can ask or should I give you a quick review? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's discuss again. Pay attention student. We have must versus must. We have already discussed the usage of must under the heading of obligation. Like we use must to talk about the strong obligation. Like you must study to pass your exam. So this is what you feel strongly about something. That's why you are giving your strong advices. Okay. Or even if you give some suggestion which you want to emphasize on it, you can use must. For example, you must try this dish. It's really yummy. It's really delicious. Okay. And we also use must in the obligation for the written rules, for the formal English and for the written rule. For example, all employees must wear masks. Okay. And if you want to make it negative, we simply make it by mustn't plus base form of the word. And what does it mean? It's mean that something is prohibited, something is not, something is unlawful. For example, visitor must not touch the painting because this is not allowed, or children must not be left unattended. So it's mean that this is prohibited. But if you want to make some obligation into the past, like if you talk about the past obligation, for example, you cannot make it in a way like you must have. So you are supposed to your past mistake, you can say you should have studied harder. Yeah, आपकी past obligation थी. It was a good idea in the past, but it didn't happen. ऐसा हुआ नहीं. Like if you can see, Ali always fails in the exam. He must work hard. अब ये क्या है? It's a strong obligation. Ali fail हो जाता है. उसे मेहनत करनी चाहिए. But when we are talking about the logical conclusion, when we have some logic, when we are pretty much sure about something, then we use must also to give the logical conclusion. For example, Ali always gets position exams. He must work hard. वो last month बहुत मेहनत करता होगा. Sir Asib has been teaching for 16 years. He must know how to teach. He always comes for different car. He must have a lot of money. So these are logical conclusion. So in order to make it, the formation is really simple. Subject followed by the must and then base form of the verb and then extra words. If you want to make this logical conclusion to negative, means that something that is not logically possible. So you use can't plus base form of the verb. If you use by the base form of the verb, which is be here, and then verb in ing.
Okay, Sarah must be cooking right now, or Nimra must be watching TV. Okay, so you can make it by using must be plus verb and ing, and then if you want to make it negative, similarly can't be plus verb and ing. If you want to make it for the future, if you're 99% sure, then you have to use will plus base form of the verb. And if you're talking about the logical conclusion, which is in the past, if something logically possible in the past, if you're talking about the past, then you have to use must have followed by the past participle. Similarly, for the negative can't have plus a past participle, and you can also make the perfect progressive by using must have been plus verb and ing, and can't have been plus verb and ing. Okay, then we discuss few examples. For example, to talk about logic, when we are 95% sure about something, for example, Ali speaks fluent English, he must take language classes. Or Sarah is sad and she's crying, she must have some problem. And here we see, here is another example. Where is Sir Hasib? If you're 100% sure, then go for it. He is in the office. Simple, tense is present. But if you're not sure 100%, but you are pretty much sure, where is Sir Hasib? He must be in the class. Must be in the class. Means this is logically possible. You are pretty much sure about it. He must be in the class. And then again, can't plus base form of the word to talk about something that is logically impossible. Okay, for example, Ali always gets accident. Then we discuss about the possible conclusion, like he must be in hurry, वो लाजमन जल्दी में होगा. He can't abide by traffic rule, वो ये लाजमन जो है traffic rules उसने follow नहीं किए होंगे. He can't focus on driving, उसने driving पे focus नहीं किया होगा. He must use cell phone while driving, लाजमन उसने अपना cell phone use किया होगा गाड़ी चलाते हुए, drive करते हुए. He can't be good at driving, वो लाजमन उसकी driving अच्छी नहीं होगी, वो अच्छा driver नहीं. Okay, clear? If you want Yes, ma'am. progressive, I can hear the music from her room. She must be watching a movie. Or where is Nimra? She must be busy in the kitchen. Can be used will plus base form of the word to talk about the future when we are 99% sure about something will happen. Okay, when you are when you are 99% sure, like he will definitely call you because he needs money. Or she will definitely not come because she is ill, because she is ill, that's why she will definitely not come. Then we discuss must have plus past participle or must have been plus verb and ing to talk about the logical conclusion, but in other words we are 95% sure about something in the past that was not is that was logically possible in the past. Similarly, we use can't have plus past participle to say that something was logically impossible in the past. For example, I have lost my cell phone. Ali must have stolen it. I have lost. As you can see, what's the result? I don't have my cell phone right now. I have lost my cell phone. Ali must have stolen it because he was here when I left. He was there when I left. जब मैंने वहां था, मतलब जब मैं वहां से गया तो अली वहां. The next example, for example, Sarah got an accident yesterday. Again, yesterday, got an accident means past. She must have driven carelessly. उसने लाजमन गाड़ी जो है केयरलेसली चलाई होगी. He must have been in a hurry. वो लाजमन जल्दी में होगी. He must have had an appointment. लाजमन उसका कोई appointment होगा. It can't have been her mistake. लाजमन ये उसकी गलती नहीं होगी. Okay, clear, student? Yes, Zumar, any question? Yes, ma'am. Actually, here is a internet connectivity problem. Your voice is interrupted again and again. Ma'am, I have a question. Ma'am, in the first slide, wait. Third line should have as a past obligation. We learned should is used for the recommendation or advance opinion, right? So, Right.
And we use has or have in a present perfect tense, right, ma'am? Ma'am, here is the wrote should have is a use as a past obligation. I have a Okay. little bit confusion in this line. ओके जब हमने वो पढ़ा था स्टूडेंट, जब हमने शुड पढ़ा था, मस्ट पढ़ा था, सॉरी, जब हमने मस्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था उसका पास्ट नहीं होगा। अगर आप अंडर द हेडिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमने पूरा एक ऑब्लिगेशन का चैप्टर पढ़कर आए, ठीक है। जब हमने वहां Yes, मस्ट पढ़ा ma'am. था तो हमने कहा था हम इसका पास्ट नहीं बना सकते इफ इट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन मैंने जब आपको शुड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हम शुड का पास्ट कैसे बना सकते हैं, शुड हैव से, when something was a good idea in the past but it didn't happen, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। So means Yes, to ma'am. criticize past mistakes. For example, if I say he should have booked the tickets earlier, okay, so what Yes, is ma'am. it was a good idea but it didn't happen, so it is sort of obligation, it is or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तभी But इन्होंने यहाँ yes, ma'am. मैंने आप लोग को आसान करके याद should have, we used should have to talk about to criticize our past mistakes, that is ठीक okay, है मैम, ठीक है। ठीक है मैम. यहाँ Yes, ma'am. नोट्स I में लिख got दिया है your क्योंकि point. जो पास्ट का, जो मस्ट का पास्ट है वो शुड हैव है, तो पास्ट ऑब्लिगेशन की बात होगी। हालांकि अभी हम डिस्कस करें कि हम मस्ट को ऑब्लिगेशंस के पर्सपेक्टिव से तो ये ठीक है, लेकिन फिर लॉजिकल के लिए अलग होगा, फिर उसके लिए वो मस्ट हैव हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. यस है ना, नो प्रॉब्लम देयर। मैम हम शुड हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लेंगे ना, क्योंकि शुड मॉडल नो है, डियर, शुड हैव बिकॉज़ हैव आ गया तो हम थर्ड शुड फॉर्म मॉडल है, ले लेंगे ना, थर्ड फॉर्म लेंगे। एग्जैक्टली, जब यस पास्ट मैम, बना रहे ना मुझे हम। पता था नहीं, आपने कहा ना शुड हैव, तो मुझे लगा आप बुक कह रहे हो, तो मुझे ये पता था कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लगती है, पर देन मैंने सोचा शायद शुड है, शुड कोई फॉर्म नहीं लेता, तो मैंने he सोचा should आपसे have कंफर्म booked, कर मैंने कहा था he should have booked the tickets, book यस मैंने मैम, आई स्ट्रेस थिंक मैंने ईडी पे सुना। आपने, हाँ या एग्जैक्टली, लाइक you should have asked me for help, you should have told your parents, again told, he shouldn't have spent so much money on a car, we should have studied harder for our exams, Yes, ma'am. got it? यस मैम, थैंक Okay, inshallah student, on Friday we discuss may, might and could, okay, to talk about the certainty, like degree of certainty, how much you are sure about it, how much, okay, where to use may, where to use might, and we can also use could as well, but we will discuss tomorrow, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, till then take care of Ma'am. yourself, Allah Hafiz, and keep practicing. Allah Hafiz, ma'am. Take care of yourself. Allah Hafiz.